Dear students, respected teachers, a very good morning to all of you. आज बहुत बड़े लॉन्ग वेकेशन के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और अब फ्रेश लग रहे होंगे। आज के दिन का इंतज़ार था क्योंकि आज बहुत 2.5 months के बाद हमारा स्कूल खुल रहा है। मैं तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ पूरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से और उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे जो हैं वो हमारा स्कूल जो है हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। Wonderful, mashallah. Take your seats, take your seats. Thank you, sir. Very good, very good. Welcome you all. Have you enjoyed your vacations? Yes! Have you learned something out of it? And today I'm here to tell you something about how I enjoyed my vacations, how I enjoyed my winter vacation. And at the end of that, I'm gonna tell you a small lecture how you can reduce your screen time or why you should reduce it. So first, let's just talk about my vacations. I'll just end it quick. Look, I enjoyed my vacations. We all enjoy our vacations because it gives us a rest from the studies. The entire year we study and in the end we get a small rest of 3 months so that we can rest and enjoy in these 3 months because we have to study in all other months. The teachers are the best resources for you people. I have seen the students, they are enjoying their own affairs. Please make sure that you will respect your teachers while they are speaking in front of you. The decency and the discipline, which is absolutely the bridge between your hard works and your goals. You have to definitely focus and concentrate on your goals within the rules and the regulations of the school. So discipline is to be given the topmost priority over in this school. There will be zero tolerance against indecency and disrespect to your teachers. My name is Latiba. Today I Ramadan. Ramadan Quran Madik Yadik Yoda Ifai. My name is Lara Shabar Khan. I am from first class. I read in Crescent Public School. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله وآتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت Myself Mohammad Arham Mehboob from class 7th Orange. So I want to say that the Crescent Public School is basically very good, very excellent school. I got a good study in this school and the teachers are very cooperative. खुशकिस्मती छ ये ये दो आवाज जम्मू की दो अल्लाह ताला जुत ऐसी सानी खतर बल्कि बाइस मगफिरत छ ऐसी दो ये दोस पे बह सारे खुशावई कर कुन रोई बोजक कुन नो रोजक अम कुन दुत कूता जलाव अकल तो फिक्र तौर कोत सोजक कम माल चथ सह दरिया शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह रिसर्च स्कूल इल्मुक आगुर लर लोर ये दानिश गहस ये नाव यूनिवर्सिटी आम लफ्जन मज वन अत लर लोर ये बड़ बार दानिश गह ये वन क्रिसेंट पब्लिक स्कूल ये क्रिसेंट पब्लिक स्कूल मज खुशावई बे नविस वरियस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का महीना आता है तब जहन्नम बंद हो जाता है और जन्नत खुल जाता है और सारे जिन्नों को बुरे जिन्नों को सारे शैतानों को जहन्नम में बंद किया जाता है। Well, all students feel like ants in pants. Means very enthusiastic, very happy, and all that. The
we are looking forward for many things this year. We are mainly focusing on their language skills plus practical part in the science subject. We are also looking forward for co-curricular activities, wherein they, whether be sports or artwork, anything. This year we are also thinking of starting a new thing, that is, in classes we will not allow students to sit idle. We will engage them in activities. Studies will be through. There will be this part of the speech will be through activities, whether be grammar or their science part or any subject, so that students will get to know the things practically and apply them into their day-to-day lives. I welcome all of you here in this new academic session 2025 after the cessation of winter vacations. I welcome all the students, my dear colleagues, my faculty members. I welcome all of them on behalf of Crescent Public School. Very much welcome to them. That Allah subhanahu wa ta'ala, we are very much thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala once again blessed us with the opportunity that we see this school once again. I'm so excited that I have came school after a break of 2.5 months, and I was very glad and excited to meet my classmates again, and there was a new experience meeting new teachers and etc. You should not use screen excess. You can use it half an hour a day, but at the time you use screen, you should play outside, or you should use utilize this time in the studying etc. and show your skills. तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कि इल्म अगर दुनिया के अंदर बहुत इल्म इंसान को होगा लेकिन अदब नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है अदब का होना। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाकन, कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। हम खुशामदीद करते हैं आज CPS में आए हुए बच्चों को कि ये साल उनके लिए बहुत खुशियों का साल हो, कामयाबी का साल हो। इसके लिए हम सब असातिज़ा किराम पूरी तरह से मेहनत करेंगे कि ये साल उनके लिए खुशियों का साल हो और ये साल उनके लिए फ्रूटफुल हो। मॉरल एजुकेशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉरल एजुकेशन से ही कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। So here we'll try our best to give moral education to our students so that they can differentiate what is right and what is wrong. क्योंकि 3 महीनों के बाद बच्चे स्कूल आ रहे हैं, मोस्टली उन्होंने अपना सारा टाइम फ़ोन के साथ स्पेंड किया हुआ है। तो हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम उनको अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो अच्छे से सीखे और जो उनकी स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा रही है वो उससे दूर हो पाए। आपके पेरेंट खून पसीना एक करके आपकी सारी मांगे है, आप क्या चाहते हो वो एकदम आपको देते हैं। अपनी सारी ख्वाहिशात एक तरफ रख के आपको अच्छा बनाना चाहिए। हमारी एक स्पेशलिटी है कि हम यहाँ पर बच्चों की इखलाकियात पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे निकले हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पर फाइज होकर उनका जो डिमिनर है वो बहुत अच्छा है, उनके जो इखलाकियात है वो बहुत बुलंद है। और मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि हमारा स्कूल जो है पूरे प्रोविंस में सबसे आगे है, सबसे अच्छा स्कूल है मॉरल एजुकेशन में और पढ़ाई में। क्योंकि हमारे स्कूल में जब से हमारा स्कूल इसका इंसेप्शन हुआ, इट वाज इन 2014, तब से यहाँ से जो भी बच्चे निकले वो बहुत अच्छे और पर फाइज है, बाहर अच्छे मुल्कों में उन्होंने नाम कमाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारी आज की जो जनरेशन है, जो हमारा आज का लॉट है, ये सबसे बेस्ट निकलेगा। स्कूल आने के वक्त इस बात का ख्याल रहे कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उन कवानीन को आप अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। There is a blanket ban so far as this motorcycle or 4-wheelers, 2-wheelers. You are not supposed to drive it, and you cannot halt them in the school campus. So make sure you will not violate the norms
the rules of the school. It has been already banned by the government as well. Minors are not supposed to drive. So make sure that you will not be coming, or otherwise it will be seized and it will be handed over to the concerned agency. I would like to throw a light on first on the moral education aspect. That Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we at Crescent Public School, we have the clear policy of inculcating, of imparting this moral lessons and moral education among our pupils. First thing is that we have to strive against our own evil inclination. The first prime objective is that we always strive against our own evil inclination. We provide the platform at Crescent Public School wherein we show the world that what the moral ethics are and how we have to impart this knowledge among our pupils. And as for the second question about this environment, believe me, this is very unfortunate that what has happened to us these days in this valley especially. You look at the few of the footages I saw the other day that at this south side there were a few lakes. They are totally, completely they are dried up right now. Nothing is there, no water, nothing at all. What we have to do, why this has happened? This is a global, this is the great, this is a cause at larger the global level. But in Kashmir, this was the valley which was recognized, which was to which it has given a name, the paradise. For which account? On account of these trees, the deforestation these days, it's at its rise, it's at its peak. We have to show the moral ethics. What we can do, see, my message to all over there is, can we change the world? It may or may not be. But can we change ourselves? Yes, for sure. Can I change myself? Yes, I can change myself. So we have to start from our own self. We have to raise these afforestation campaigns and all that, and we have to decline these deforestation concepts. The thing is, in Kashmir, in our society, screen times are just too much. These things also affect us mentally. हमारा आई विजन जो होता है वो कम हो जाता है इससे, और जो मेंटली है ना, जो देखो ये उसमें कंटेंट जो होता है ना, वो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. The thing is, when we watch something aggressive or we watch something, we also become like that. It's not like some people will say, no, हमें कुछ नहीं होता है. मगर ये होता है, ये mental health पे बहुत फर्क पड़ता है these days. Mobile phones affect our mental health really, really much.